So exception handling allow a program to continue executing or notify the user of the problem and terminate the program in a controlled manner. So basically, exception handling is required to terminate the program in a controlled manner. We are going to terminate because see, whatever input user has given, maybe we do not want it for the next processes which we have implemented. So we'll terminate the program, but not haphazardly or in a abnormal manner. It should be in a controlled manner. Okay, so that's the reason we need to have exception handling routine in your program. And this is the life cycle. First, you need to hit the exception. Okay, so you need to find or you need to anticipate where exception may occur. Then throw that exception, then catch it, and then handle it. Okay, so this part we have seen. Then we also discuss about different syntax issues related to try and catch. Okay, this is the syntax of throw. Some code will be there, then based on some condition we'll throw one exception. Okay, so if for example here you are trying to divide write a code for a division, okay, a divided by b. So in that case, this condition would be if b is equal to 0, then throw this exception. Okay, otherwise next part is whatever operation or the process that you want to implement. Then another condition, throw the exception. So likewise, based on the different situation, you may throw different types of exceptions. Okay, so in one try block, you may have multiple throw statement based on different situation. Like this is maybe divide by 0 error, this is array index out of bound. So based on how many conditions you want in your program, based on that, for multiple conditions, you can have multiple throw statement in one try block. Okay, and based on that, you will have multiple catch also. Like for all the throw here, like here, I'm throwing only integer type of exception. So it's okay if I have only one catch wherein I will catch integer type of exception. But just imagine that here I'm throwing integer type of exception and here I'm throwing character type of exception. So in that case, I should have multiple catch statements. Okay, so for one try, I can have multiple catch statement. See, in this first catch statement, I'm catching integer type of exception. In second one, I'm catching character type of exception. And the last one is default. If it doesn't match with integer or character, something else like float, double, any other data type is there, in that case, this default catch will be executed. Okay, so one of these catch statement would be executed. It's not like multiple catch statement would be executed. Based on the throw, whatever type of exception you are throwing from try, if you throw integer, then only this catch will be executed. If you throw character, then only this one. Okay, and if you throw any other type than integer and character, then only default will be executed. So at one point in time, one catch statement would be executed. Okay, and once that catch statement is executed, your control comes after the catch statement. It will not again go back to the try. It will just go to the next statement after catch. Okay, so these are some important points that we have discussed yesterday, okay, about execution of the try and catch and about exception. Now today let us discuss about the next thing, that is rethrowing the exception. Okay, rethrow exception is what? Like now just now we have discussed very simple type of try catch, wherein in main only I'll have try catch, but it is possible that I may have try catch in the main program as well as in the function also, calling function also. Okay, so here just assume that this is the main program, and in this main program I have written try. Okay, so in case if this function is throwing any exception, this catch is there to catch that exception. Okay, so if I want to catch this exception which is thrown by the function, I'll write try and catch over here in the main program. Now what has happened, I'll call this function, so control goes to this function. Okay, control goes to this function, and then here I'm saying throw I.
throw I is what? I'm throwing some exception. Maybe I can have some if over here, but I throw some exception of type integer. Okay, this I is suppose integer data type. So here I'm catching this integer type of exception here, and then maybe I can have a cout statement here to display what kind of error is there exactly. Okay, and now if I want that here I have I caught that exception and I have handled this exception in this function itself. But if I want that main program from where I have, this function is called, so if this function wants that main program should also catch this exception. Okay, I have already displayed the message here, cout and some appropriate message is displayed. But in addition to that, if I want main program should also handle this exception, in that case, I can throw it again. Okay, simply I will say throw. I will not mention any data type. It is not required, or maybe you can say throw I also. But simply I will throw this exception. With that, what will happen? See, once it is already thrown here in this function, which is caught here and handled here. But in addition to that, if I want my main program should also handle it. So in that case, a main program handle in the sense give more detailed information about that exception. So in that case, I can rethrow it. Rethrow matlab ek bar to throw kar diya aapne. Again, if you are throwing, it is called as rethrow. Okay. So the keyword that you are using is throw only, but as we are throwing it again, that's the reason it is called as rethrow. Okay, so throw it again, that means again it will be thrown to the catch statement in main. तो यहाँ से आपका control main यहाँ से आपका execution खत्म हो गया function का. Here once it finds the throw statement, immediately from here the control goes to this catch. Okay. And here in this catch, whatever message you have displayed or whatever things you have put here in this catch, all those things will be executed, and now it will come to the end. Okay, so this rethrowing of the exception is also possible if you are calling some function. So that function is also handling the exception, and in addition to that, if you are having this throw statement again here, it will be catched by your main program. अगर मान लो यहाँ पे throw नहीं है, तो then what will happen? If this throw is not there in this function, if this statement, only all other things are there like throw I and everything is there, but this only this throw statement is not there. What will happen in that case? What is your guess? If this throw statement is not there, what will happen? The cout statement will not be executed. This cout, right? Now, see, if this throw is not there, that means the compiler will understand that this exception is already handled here. So it will end this throw is not there. Then in that case, it will end it properly catch. And after catch, whatever statements are there, all those statements will be executed. Then there is a end of this function. Control goes back to this place from where function was called. Okay. And after this, directly control transfer to the next statement after catch. It won't execute this outer this catch there. Okay, if you don't throw it again from here, it will just execute the next part of it and goes to the function call. Okay, and then it encounters the closing bracket. After this closing bracket of try, it will directly jump to the next statement after catch. So ये main का जो catch है, it will not be executed if you don't have this throw statement over here. तो rethrowing नहीं होगी इस case में. Okay, if you are explicitly not saying this, because already this this particular exception is already handled here in the function. Okay, so in that case, and if this throw is not there, it will just resume the next execution. मतलब इसके बाद जो भी statements है वो सारा execute होगा. Okay, and it won't execute this catch. And if throw is there, what will happen? From here, the control directly jumps to catch. मतलब इसके बाद ये closing bracket के बाद catch में अगर यहाँ पे कुछ statements है, it will not be executed. Directly throw मतलब यहाँ से जाएगा catch में. It will execute this entire part and then goes to the next statement. Is it clear? Rethrowing the exception. So this way also you can rethrow the
exception as per the requirement. मतलब कभी कभी कैसे होते हैं कि बहुत crucial exceptions होते हैं. In that case, you can handle it here, and then from catch also you can throw it directly to catch here. Otherwise, if this is not there, the next part will be executed. कभी कभी आपको कैसे कि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल एक्सेप्शन है तो यहाँ से डायरेक्टली वो बाहर निकल जाना चाहिए, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसको नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए. इन दैट केस यू कैन यूज रीथ्रो. Okay, so this way rethrowing of the exception is also possible. Okay, now let us discuss some small examples related to exception handling in order to understand it in more detail. Just some relevant examples. Okay, so यहाँ पे like some integer variable I have declared student age. Okay, now just understand the flow where I'm putting if condition, where is throw statement and all that. Okay, so I've declared one variable student age. Here I'm saying enter this age, accepting the age from the user. Now in try, I'll put this condition. If student age is less than 0, is it wrong if anybody enters a negative number here for age? Yes, it's right. Yes, na? See, age cannot be negative, है ना? तो that is exception. मतलब अगर age ही आपको negative, if you are getting negative age, in that case, whatever thing you are doing here after this, whatever processing you are doing, everything will go wrong only, no? Say based on age, maybe you want to calculate something like maybe what do you say, medical for medical what do you say policies, you calculate what should be the what do you call EMI नहीं उसे क्या बोलते हैं, monthly जो हम yearly whatever amount we pay in medical policies, in that based on the age they calculate that amount, okay, which you need to give every year, okay, submit every year. So in that case, for this age, if by mistake if user enters a negative value, in that case it should throw the exception. Otherwise, whatever your calculations are there for that annual payment, that will go wrong. Okay, so here first thing that I need to check is if student age or any age that we are accepting, student nahi hai, for example, any age value we are accepting. So if age is less than 0, in that case it should throw the exception. Okay, मतलब ये लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये कंपाइल टाइम प्रॉब्लम, इट इज based on the runtime issue. Runtime user ne by mistake some negative value is given for the age. So in this case you need to catch this exception. Okay, so if student age is less than 0, you will throw the exception. यहाँ पे see you may have normal throw statement also, okay, and you may throw some integer type of exception, like I'll say throw 0. तो ये किस टाइप का throw कर रहे हैं हम exception? Integer. Okay, so if I'm throwing integer type of exception, how to catch it here? I should have this statement in catch. If I'm saying throw 0, throw 10, any integer value if I'm putting, then I should catch it as integer. Okay. Now, why I'm taking different numbers here? Like sometimes I may also say 0, 1, 10. क्यों ऐसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे? Anything if I say any integer value, it will transfer the control to this catch, है ना? क्या होगा यहाँ पे किसी भी टाइप का like see whenever student age is less than 0, it will throw integer type of exception, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 डाला है and the control is transferred here. अब यहाँ पे क्यों हम अलग अलग नंबर्स डालते हैं? Like I may simply have throw statement also, no? Just now like here in this case simply saying default. इससे क्या होगा? When I'm not putting any number over here, okay, so in that case it will catch, it will transfer the control to this default catch, है ना? और यहाँ पे जो भी है वो execute होगा and then the control comes here, और उसके बाद catch में say here if I'm having some statement, some cout and something, so after, if this is the issue, it will throw the exception, it will get caught here,
display this message on the screen, age cannot be less than 0, okay, or age cannot be a negative number, and then control comes out of this catch and it will resume the next execution. इसके बाद जो भी आपने कोड लिखा है वो resume हो जाएगा. मतलब in this case, which part is not getting executed in this particular situation whenever age is less than 0? See out student age student. This part is not getting executed. So now tell me, like if it is divide by 0 condition, okay, divide by 0 condition, where to put that expression or equation? Before dividing. Before dividing, है ना? Before dividing, I should check for the value. It should not be equal to 0. If it is equal to 0, I should throw the exception, and then here I can put that particular equation. आपको ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझना है. अगर मतलब मान लो यूजर ने गलत इनपुट दे दिया तो दिस कंडीशन विल बी मेट, it will throw the exception for wrong input and it will get catch here and next आपका control यहाँ से यहाँ जाएगा. मतलब यहाँ see here you need to observe one thing. After executing this, your control is not getting back to this statement. This is completely ignore. Yes, so this part is not getting executed. Throw के बाद this part is executed and after this next whatever instruction sets are there, the control will get resumed from this place. Okay, so here important point that you need to understand is this part is not getting executed. Okay, so that means what? Whatever if exception is there, this will be catch over here, and if exception is not there, if this situation is not there, then whatever part you want to execute, that part you need to put here. Should I have else statement for this if? मतलब अगर ये condition है तो throw करो, else execute this. Else डालना चाहिए मुझे यहाँ पे. Yes ma'am, yes. चाहिए मुझे? No ma'am. See now if you have observed whatever I have just explained, आप सोचो एक बार, like rethink it. Do you actually need this else statement over here? No ma'am, no. No, na? See here. If it will fall. Yes. You were saying something? Nothing. Okay. See, if this if condition is true, in that case it throws the exception, okay, and this part will be executed, next part, okay. Now if this is not so, if this condition is false, matlab user has given appropriate input, in that case what will happen? Automatically your next statement will be executed. So in that case this else is not required, because automatically when this condition is false, ये else नहीं भी होता है, मान लो यहाँ पे, if this else is not there, okay, just assume that this else is not there, और यूजर ने age के लिए input दिया for example 15, okay, so if student age is 15, this condition is false, ये false हो गया, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा, it won't throw the exception, this condition is false है तो what will be the next thing? Which is the next instruction after this? Immediately this is the next instruction. So automatically whenever this is false, the control goes to the next statement. So even though if else is there or it is not there, automatically the control goes to the next statement if this condition is false. Okay, that's the reason I haven't put that else statement over here, क्योंकि अगर ये condition false होता है तो automatically आपका next तो होना ही है execute. Okay, so automatically that is getting executed if this condition is false. So that's the reason else is not required over here. Okay, और मान लो like 15 is the age, this condition is false, so this part is executed. मतलब we are displaying the age on the screen, maybe we can calculate something based on age. वो सारा calculation आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा? See here you need to put that entire thing. Whatever code you want to write, if this age is properly entered, that entire code to be entered here. अगर ये condition false है, proper you are getting proper input, तो in that case whatever things you want to calculate, you calculate in this section. अब ये सब calculation होने के बाद there is a end of the
try statement. Okay, now after this, where the control goes, whether it will enter in the catch or it will go to the next statement after catch. Next statement. After catch है ना. See, if this you are getting proper input from the user, आपका age proper positive age है, तो you will execute this entire part, जो भी आपको calculation करना है, display करना है, complete everything. Then this is the end of the try statement. After try, the control directly goes to the next statement after catch, क्योंकि यहाँ पे कुछ exception हुआ ही नहीं है ना. Everything user has entered properly. ये आपका एक्सेप्शनल केस हुआ ही नहीं है. दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो प्रॉपर एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस, ओके, विद प्रॉपर इनपुट्स. एंड देन यू नीड नॉट एंटर इन द कैच, क्योंकि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो ही गया है. ओके, यूजर हैज गिवन प्रॉपर इनपुट. सो आफ्टर दिस, after try statement, your control goes to the next statement after catch. So this catch will not be executed if you don't get any exceptional input. अगर ये exception नहीं हुआ तो then it won't execute catch. In case of exception only, it will execute catch and the control goes to the next statement. In that case, this part is completely ignored. It will not get executed. अगर आपका कुछ exceptional condition है तो then catch gets executed. और अगर exceptional condition नहीं है तो then this part is getting executed. Okay, in that case, after this, immediate control goes to the next statement after catch. मतलब ये catch execute होगा ही नहीं अगर exception नहीं. This same thing we want. यही चाहिए ना हमें. अगर exception है तो catch and handle it. If exception is not there, execute in a normal way and go to the next statement. Catch की जरूरत कब है? Exceptional case में. Yes, in a similar manner, it is getting executed. Okay. जो आपकी requirement है उसी के accordingly it is getting executed. Okay. So I hope you have understood it with this relevant example. Yes. Yes. Now let us discuss one more example here. This is division by zero example. Okay. So here I'm having A, B, C, three variables. A, B, two inputs I'm taking from user. Then C is equal to A minus B. Now in this case, should I handle any exception for this equation? Is it required? No. No, है ना? This will not generate any exceptional case. हाँ, किस टाइप की exception हो सकती है कि like A minus B is giving such a small number that you cannot store in integer type of variable. मतलब उसकी range होती है. See, for integer also some range is there. If you remember, आपने C language में पढ़ा होगा या initially C++ also I have explained you. Whenever any data type is there, say here if I say integer, say for integer on this particular machine I am getting 4 bytes. Okay, 4 byte matlab 4 bytes I am getting. Just this is some additional thing I am telling you कि जरूरत तो नहीं है for this statement, but very very rare condition I am discussing कि 4 bytes आपके integer को allocate होता है. Okay. Now if this is of type float or double type का कुछ तो है, ठीक है, float type का, float के लिए भी 4 bytes are given. So now if I'm saying C is equal to A minus B, अब मान लो ये A और B, these are very small number, 0.0000 ऐसे कुछ तो भी बहुत small number है. And then after subtraction, I'm getting very small value in decimal number, which I'm not able to store in this C. इतनी small value, क्योंकि see 4 bytes मतलब the 4 bytes is 32 bits, right? Na? So 2 raised to 32 plus and minus, 2 raised to 31 rather, plus and minus. That is the range for this A, B and C. So these many small numbers and the biggest number that you can store in this ABC. So मान लो ये बहुत rarest of rare situation है कि वो subtraction होने के बाद इतना small number है कि it is going beyond that range, which range is given for this float
type of variable, वो ब्रेन से भी बाहर जा रहा है, you will not be able to store. So in that case you can handle the exception. ये बहुत rare situation है, rarest of rare. Okay. तो बट जस्ट टू टेल यू कि मतलब हो सकता है अगर आपको करना ही है, लाइक इफ यू आर टेकिंग वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ऐसे डेसिमल नंबर में आपका एप्लीकेशन ऐसे है कि मैटलैब टाइप का कुछ एप्लीकेशन है. मैटलैब अगर आपने सुना है टूल मैटलैब, तो उसमें बहुत ही लाइक माइन्यूट टाइप के कॉम्पिटिशंस होते हैं डेसिमल नंबर्स में. सो इन दैट केस एवरीवेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर पुटिंग एनी इक्वेशन. Okay, all types of exception to be handled properly, कि उस रेंज के बाहर भी जा रही है उसकी वैल्यू आफ्टर रिजल्ट, यू हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली. ओके, लेकिन हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन में ये सिचुएशन नहीं आता है इन जनरल. ओके, बट सो नाउ कंसिडरिंग दिस, इफ हम नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हैं, ओके, सो इन दैट सिनेरियो एक्सेप्शन नीड नॉट बी हैंडल फॉर दिस सिंपल टाइप ऑफ इक्वेशन. ऐसे क्या होगा इससे, अगर a वैल्यू इज ग्रेटर यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, एंड b अगर आपका ग्रेटर नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, तो यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला. ओके, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. सो हियर यू नीड नॉट हैंडल एनी एक्सेप्शन एज सच. ओके, so that is the reason I haven't put this equation in try. Okay, now next is I want to calculate this result 100 divided by c. Okay, ये मुझे डिस्प्ले करना है कैलकुलेट करके. Now in this case if value of c is 0, in that case certainly this is exceptional situation wherein it will the program will abnormally terminate. अगर मैंने वो exception handle नहीं किया तो इस situation में अगर मान लो ये यूजर ने क्या एंटर किया है, a is equal to 10 and b is equal to 10. Okay, a is equal to 10, b is equal to 10. So what will be the value of c? 0. ओके, तो ये रन टाइम हमें पता चलेगा कि c is 0. ओके, सो इफ c is 0 you need to throw the exception, otherwise क्या होगा, नहीं किया तो यहाँ पे abnormal termination होगा. Yes, and abnormally your program is terminated here and it will end the entire program. Directly main के बाहर निकल आएगा वो control. Okay, so that's the reason here I'm handling this exception. I'm checking whether if c is equal to 0, throw the exception. Okay, and then in this situation a is 10, b is 10, मतलब ये condition true हो गया, c is equal to 0, so it will throw the exception, control comes here and it is displaying this exception on the screen divided by 0 exception. Okay, and then catch ends, return 0 will be executed and your program will be normally terminated in a controlled manner. मतलब इसका मतलब देखो अभी like c is 0, इस केस में थ्रो से आपका कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे चला गया और ये सारा एग्जीक्यूट हुआ. आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इन दिस केस? हुआ कि नहीं हुआ? इफ c is equal to 0, in that case whether this statement is executed, yes or no? No. नो, है ना. कल किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, अ गर्ल सम शी आस्क्ड मी कि मैडम ये कैसे मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट, शी वाज कंफ्यूज्ड विद दिस टाइप ऑफ थिंग ओनली दिस. So answer to that question yesterday also I explained, but now I think it is more clear to her and everyone. Like if this situation, अगर आपका exceptional condition है तो exception ही handle होना चाहिए, आपका normal program नहीं execute होना चाहिए. Otherwise what is the point in handling exception? Exception handle किया और फिर divide by 0 कर दिया, तो there is no point, है ना. मतलब अगर exceptional situation है तो you handle it properly and end it. इसके बाद आप बाकी सब कोड हो सकता है आपका, मे बी कुछ और function call आपने किया है and all that, or maybe some equation you have written, result is equal to something a plus b, something, whatever is the next thing, that part you can execute. But if value of c is 0, you should not execute this part. There is no point in executing this part. यही तो avoid करना है हमें, इसीलिए तो हमने exception handling किया है ना. So the point that you need to understand is if exception is there, it will be thrown here, directly control comes here and the next part getting
executed, but this part is not executed in case of exceptional situation. अगर नहीं है exceptional situation, if c is proper value, it's not equal to 0, तो कौन सा part execute होगा? ये part execute होगा, और यहाँ से directly control कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, फिर catch नहीं execute होगा. अगर सब proper चल रहा है तो catch में नहीं जाएगा, it will resume the next things and it will calculate the next things, whatever you have written here. Yes? Is it now very clear, exception handling? Yes, ma'am. Yes? So now let us take one example. Just now we have discussed about rethrow also. So let us discuss about rethrow. अब यहाँ पे देखो, like rethrow मतलब हमने क्या देखा है कि in function also I am handling the suppose exception, और मान लो नहीं भी किया है तो from there I can throw the exception. Okay, so this is not rethrow, actually normal throw exception. Here what I have done in main try block is there. ठीक है, try में I am calling the function. Now while calling the function I am giving these two values, null or zero. Okay, so null and zero, if I'm giving these values and the control comes here. अब इस function में मुझे ये values नहीं चाहिए. For example, I don't want null or zero for this pointer, and for x, for these input variable I don't want null and zero value. So that is exceptional situation for this particular function. मान लो यहाँ से अगर normal कुछ बाकी variables जाते हैं, like here instead of null some pointer is passed here, pointer 1, sorry, and instead of 0 I am passing 10. Okay, so if this is a situation wherein I am passing normal pointer and value 10, तो यहाँ पे क्या होगा? I am checking this condition. Is this pointer equal to null? This pointer equal to null? No, it is not equal to null. तो ये throw नहीं execute होगा. X equal to 0 है क्या? नहीं, it is equal to 10. So again this is not executed. तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा some functionality, जो भी calculation है, जो भी लिखा है, that part will be executed. और ये execute होने के बाद function complete हो गया, आपका control कहाँ पे आ गया? फिर से यहाँ पे आ गया, है ना? यहाँ से there is a end to try statement. After this exception हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? Catch में नहीं जाएगा, directly it will go to the next statement, that is return 0. Okay, तो ये exception नहीं है तो ये situation है. अब मान लो यहाँ पे exception है, मतलब like here I am passing मतलब calculation मेरे कुछ ऐसे हो गए यहाँ पे before try, that first input that I am passing here, that pointer 1's value is null, और ये दूसरा भी मेरा 0 हो गया for example calculation के बाद. तो like here you need to understand, मैं ऐसे explicitly तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि null pass करूंगी वो function को. Like this pointer 1 कुछ तो है आपका pointer जिसकी value null हो गई, उसे memory नहीं मिली या something like that, and another variable is there, some x is equal to a into b, ऐसे कुछ कैलकुलेशन किया एंड यूजर ने बाय मिस्टेक b का वैल्यू 0 एंटर किया. अगर b इज 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0, और यहां से मैं x को पास कर रही हूँ. आई एम पासिंग x हियर एंड आई एम पासिंग दिस पॉइंटर 1 हियर, है ना? मतलब मैं खुद तो एज ए प्रोग्रामर मैं खुद यहाँ पे नल और 0 नहीं पास करूंगी, लेकिन बाय मिस्टेक कैलकुलेशन करते करते या एग्जीक्यूशन में ऐसे हो गया, यूजर ने कुछ गलत इनपुट दे दिया, तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना? ऑटोमेटिकली मैं खुद तो नहीं करूंगी 0 पास, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन इट हैज कम टू 0. ओके, सो इफ आई एम पासिंग दीज टू वेरिएबल्स हियर, अब यहाँ पे आने के बाद what is the first thing? pointer, is it equal to null? yes, जो हमने input value डाला था वो null हो गया, तो it will throw the exception. पॉइंटर टाइप का एक्सेप्शन, मतलब आपको अभी समझ में आया होगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हम थ्रो कर सकते हैं. Now here I am passing pointer type of exception. It should not be necessarily only integer, character, ऐसे कुछ नहीं है, किसी भी टाइप का exception you can throw. Now here I am passing which type of exception? Integer pointer. Okay, and यही से आपका गलत हो गया इनपुट, तो थ्रो पॉइंटर. नाउ हैव आई हैंडल द एक्सेप्शन इनसाइड दिस फंक्शन? मैंने इस फंक्शन के अंदर किया है? No.
नो। तो अगर यहाँ पे नहीं किया है तो व्हाट इट डज, ऑटोमेटिकली इट सर्चेस फॉर द आउटर फंक्शन कॉल। मतलब आउटर फंक्शन कॉल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ से उसने आपने उसको कॉल किया, तो इट विल ट्राई टू फाइंड वेदर हियर एक्सेप्शन इज हैंडल। यहाँ पे तो हमने किया है एक्सेप्शन को हैंडल, है ना। तो ये थ्रो होने के बाद इफ इमीडिएटली हियर कैच इज नॉट देयर, इट विल गो, इट विल टर्मिनेट दिस फंक्शन ओवर हियर। यहाँ से तो वो बाहर निकल आएगा, है ना। थ्रो करने के बाद दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड एंड द कंट्रोल कम्स बैक टू द कैच स्टेटमेंट ऑफ मेन प्रोग्राम। तो ये इसका यूज हुआ, यहां से थ्रो किया लेकिन आपने यहाँ पे कैच किया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। थ्रो करने के बाद यू मेक श्योर आइदर यू आर हैविंग ट्राई एंड कैच आइदर इन द फंक्शन और इन मेन, कहीं तो आपका ट्राई कैच होना चाहिए एटलीस्ट एक जगह पे। दोनों जगह पे हो सकते हैं, दोनों जगह पे भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक जगह पे तो इट शुड बी देयर, एटलीस्ट इट शुड बी हैंडल इन फंक्शन और इन मेन। ओके, तो अगर यहाँ पे नहीं होगा, फंक्शन में नहीं होगा, तो आफ्टर दिस थ्रो स्टेटमेंट इट विल फाइंड आउट द कैच फॉर फ्रॉम वेयर इट हैज गॉट अ कॉल। यहाँ से उसे कॉल मिला था तो यहाँ पे वो ढूंढेगा कि उसे कैच मिल रहा है। इट got the catch statement over here, it will get executed and then return 0 will be executed. So from here again control doesn't come back to the function, it after catch the next statement after main will be executed. So after this whatever is written will never get executed in case of exceptional situation. Okay, अब मान लो पॉइंटर नल नहीं है आपका, पॉइंटर प्रॉपर है, इट इज नॉट नल, सो इन दैट केस अगेन कंट्रोल कम्स हियर, पॉइंटर इज नॉट नल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। नाउ इफ x इज 0, हाँ यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, x इज 0, यस, तो इन दैट केस अगेन इट विल थ्रो द एक्सेप्शन, कंट्रोल कम्स टू द कैच, इट विल एग्जीक्यूट दिस एंड नेक्स्ट इज रिटर्न 0। और ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है तो देन नॉर्मल कोड आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। Okay, then in that case after execution control comes back to this and यहां से फिर कहां जाएगा, डायरेक्ट कैच के बाहर जाएगा, it will never enter, if exception is not there it will never enter into catch. Now is it clear? अब यहाँ पे किस टाइप का मैंने किया है कैच, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब ये दोनों के लिए काम करेगा, पॉइंटर के लिए भी काम करेगा और ये इंटीजर टाइप के थ्रो के लिए भी काम करेगा, isn't it? This is common default catch statement कि जो irrespective of data type it will be executed for, you can execute it for any data type. Okay, so based on situation you can have different catch statement. अब अगर मान लो मुझे अलग अलग मैसेज चाहिए कि अगर पॉइंटर टाइप का है तो देन आई वांट डिफरेंट मैसेज, और इस टाइप का अगर है तो मुझे अलग मैसेज यूजर को डिस्प्ले करना है, तो देन कैन आई हैव अ कॉमन डिफॉल्ट स्टेटमेंट? Yes or no? Have you understood the situation? अगर मान लो हाँ मुझे पॉइंटर नल है तो एक मैसेज दिखाना है कि पॉइंटर कैन नॉट बी नल, एंड x, if x is equal to 0 then I need to show the message that x value cannot be 0. Okay, दो अलग अलग मैसेज देने हैं, तो मुझे कैन आई हैव अ कॉमन डिफॉल्ट कैच ओवर हियर? इस केस में क्या होगा, कॉमन No, डिफॉल्ट, हाँ कॉमन डिफॉल्ट कैच है तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ पॉइंटर नल आल्सो, इट विल डिस्प्ले द सेम मैसेज कि कॉट एक्सेप्शन फ्रॉम फंक्शन, जेनरिक मैसेज है ये। और यहाँ पे भी मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी वो क्या डिस्प्ले करेगा, कॉट एक्सेप्शन फ्रॉम फंक्शन, लेकिन किस टाइप का एक्सेप्शन आया वो मुझे समझ में नहीं आया, बस मुझे फंक्शन में एक्सेप्शन मिला है, कॉमन मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, सो आउट ऑफ दिस यूजर विल नॉट गेट एनी हिंट, यूजर को कुछ हिंट नहीं मिला है कि आपका प्रॉब्लम पॉइंटर में हुआ है कि एक्स में हुआ है, किस में प्रॉब्लम है। सो इफ यू वांट अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज, सो इन दैट केस यू नीड टू कैच स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर स्टार पॉइंटर, इस टाइप का एक्सेप्शन कैच करना है, और यहाँ पे आपको मैसेज क्या देना है कि पॉइंटर कैन नॉट बी नल, स्पेसिफिक मैसेज। ओके, और दूसरा कैच यहाँ पे होगा इस टाइप का होगा, ओनली इंटीजर टाइप का कैच होगा, और यहाँ पे मैसेज आप क्या डिस्प्ले करोगे, सी आउट एक्स वैल्यू x cannot be 0. Okay,
So I hope you understood this concept now. कहाँ पे मुझे स्पेसिफिक ट्राई कैच चाहिए? सी हियर नाउ, इफ pointer related exception is there, it will properly, it the control comes to this place, यहाँ पे कैच होगा वो पहले पहले वाले कैच में, and it will give me appropriate message. अगर मान लो x में प्रॉब्लम है, x is equal to 0, in that case control comes to this catch and it will give me appropriate message. Okay, so इट डिपेंड्स. मुझे अगर इस टाइप के एकदम स्पेसिफिक मैसेज यूजर को दिखाने हैं तो इन दैट केस आई हैव टू हैव मल्टीपल कैच स्टेटमेंट. हर एक चीज के लिए मुझे यहाँ पे अलग कैच लिखना है. एंड इफ आई एम हैप्पी विथ कॉमन मैसेज देन आई कैन हैव अ डिफॉल्ट कैच स्टेटमेंट. ओके, so this is how actually while writing the code this exception handling is used. Okay, so we have discussed some relevant example related to exception handling and we also discuss about rethrowing. Rethrowing में यहाँ पे क्या हुआ, like I'm calling a function में this throw statement will throw the exception from here, it is getting catch here, something will be displayed here, and after that again throw statement, another throw statement मतलब rethrowing. So this throw statement will throw it to the catch statement of the main. So this part is also getting executed. Otherwise अगर ये throw नहीं होता है तो then only this exception is handled here only. जो भी आपका next होगा वो execute होगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा control try, and then directly from here it will go out of the try catch block. ये part execute नहीं होगा अगर throw नहीं है तो. दो बार यहाँ पे थ्रो डाला है मतलब व्हाट, हियर आल्सो आई एम कैचिंग द एक्सेप्शन एंड आउटसाइड दिस फंक्शन इन मेन आल्सो आई एम कैचिंग द एक्सेप्शन. ओके, this is about rethrowing the exception. Now restrictions that you can put on function, which sometimes no we want to put the restriction on the function. अब कैसे डालते हैं कि while defining that function I can mention void function and throw int and double. So any other type of exception will not be thrown from this function. सिर्फ ये function कौन कौन से exception throw कर सकता है? Only integer and double. तो if in case if you want to put the restriction on the function that this function can only throw integer and double exception, so in that case you can put this restriction in this way. मतलब जहां पे भी आपने function लिखा है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा throw and in parenthesis integer and double. So inside this function if you try to throw any other type of exception then it will be an error. तो इस टाइप के restriction आप डाल सकते हो. किसी function को आपको throw करना ही नहीं है, मतलब you don't want this function to throw any type of exception. Okay, in that case you can prevent a function to throw any type of exception also. मतलब इस function में you will not be able to throw any type of exception. मतलब throw nothing मतलब ये कुछ भी किसी भी टाइप का एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता है. तो इन केस इफ यू रिक्वायर, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती है हमें पुट रिस्ट्रिक्शन, बट दिस प्रोविजन इज देयर इन C++ कि आपको अगर रिस्ट्रिक्शन डालना है कि ये फंक्शन में थ्रो नहीं करना चाहिए एक्सेप्शन, सो यू कैन पुट दैट रिस्ट्रिक्शन. और इस फंक्शन को सिर्फ इंटीजर और डबल ही थ्रो करने हैं, अदर एक्सेप्शंस इट कैन नॉट थ्रो, सो दैट रिस्ट्रिक्शन आल्सो यू कैन पुट. Okay, you may have exceptions in constructor and destructor as well. वो भी एक तरीके के functions ही है, तो वहां पे भी आप exception handling कर सकते हो. If exception is thrown while executing a constructor, its destructor would not be called. अगर मान लो कंस्ट्रक्टर में कोई एक एक्सेप्शन आपने थ्रो किया है, कुछ लाइक समथिंग इज वेंट रॉन्ग, कंस्ट्रक्टर सपोज मेमोरी एलोकेशन किया है आपने और मेमोरी एलोकेशन उतनी सफिशिएंट मेमोरी नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस यू आर थ्रोइंग द एक्सेप्शन. नाउ इफ यू आर थ्रोइंग द एक्सेप्शन, इन दैट केस डिस्ट्रक्टर पार्ट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड. अगर कंस्ट्रक्टर में ही आपका एक्सेप्शन आ गया तो डिस्ट्रक्टर नेवर गेट्स एग्जीक्यूटेड. Okay, so that point you need to keep in mind. तो मान लो अब यहाँ पे आपने मेमोरी तो अलोकेट कर दी है कंस्ट्रक्टर में और उसके बाद आपको कुछ तो एक्सेप्शन आया है आफ्टर यू हैव अलोकेटेड द मेमोरी टू फर्स्ट एरे, और सेकंड एरे को आपने जब मेमोरी अलोकेट किया तो दैट टाइम सम एक्सेप्शन हैज अकर्ड.
ओके, नाउ इट विल नॉट एंटर इन द डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर में नहीं गया तो डिस्ट्रक्टर में आपने क्या लिखा था, डिलीट स्टेटमेंट टू फ्री दैट मेमोरी, है ना। मैलॉक से या कैलॉक से क्या करते हैं हम, मेमोरी असाइन करते हैं, लेकिन एट द एंड वी नीड टू फ्री दैट मेमोरी, राइट। आफ्टर यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कैसे होता है, we as a programmer we allocate the memory, and before you complete your program you have to free that memory, okay, otherwise वो लीकेज, मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज यू अलोकेटेड इट बट यू डिडंट फ्री इट, है ना। तो दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मेमोरी लीकेज, सो दिस शुड नॉट हैपन। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके कंस्ट्रक्टर में आपने मेमोरी अलोकेट कर दी, फर्स्ट एरे को मेमोरी अलोकेट कर दी, लेकिन दूसरे एरे को जब आप अलोकेट कर रहे थे तो एक्सेप्शन हैज अकर्ड। एक्सेप्शन से क्या होगा, इट वोंट एग्जीक्यूट द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में आपने क्या की था, क्या किया था, डिलीट की थी जो भी मेमोरी आपने ली थी, यू जस्ट फ्री दैट मेमोरी। अगर डिस्ट्रक्टर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो व्हाट विल हैपन, दैट मेमोरी वोंट गेट डिलीटेड। अगर डिलीट नहीं हुआ तो देन इट इज मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम, आपने अलोकेट करके रखी है लेकिन वो डिलीट नहीं की आपने मेमोरी, तो देन इट इज डैंगलिंग मेमोरी और मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम, ओके। तो सो इन कैच ब्लॉक फर्स्ट, तो आपको कैच में पहले क्या करना चाहिए, मैसेज डिस्प्ले करने से पहले यू नीड टू फ्री दैट अलोकेटेड मेमोरी। अगर मान लो आपका मेमोरी अलोकेशन करते वक्त कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो फर्स्ट यू नीड टू फ्री दैट मेमोरी इन द कैच ब्लॉक एंड देन हैंडल द एक्सेप्शन, ओके। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में बस ये केयर करनी है, अदरवाइज इन द वे यू हैंडल एक्सेप्शन इन नॉर्मल फंक्शन यू कैन हैंडल इट इन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायनामिक मेमोरी अलोकेशन अगर है तो यू नीड टू टेक दैट केयर। अब यहाँ पे देखो, लाइक आई हैव टेकन वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस क्लास ए इज देयर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ओके। अब कंस्ट्रक्टर में आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर दिया यहाँ से, ओके। एंड नाउ मान लो यहाँ पे here after this statement कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है आपका यहाँ पे, लाइक while allocating to D2 also आपने D2 को allocate कर रहे हो मेमोरी, या फिर something some calculation you are doing which is making some mistake, कुछ तो कैलकुलेशन आपने किया है, सपोज वो डिवीजन वाला ही कैलकुलेशन है आपका, डिवाइड बाय बी, सम कैलकुलेशन इज देयर, या मेमोरी एलोकेशन में, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपरली, मेमोरी इज प्रॉपरली अलाइंड अलोकेटेड, और यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन में बी की वैल्यू 0 आ गई है। So in this situation, you need to check for that that condition. If b is equal to 0, in that case, you will throw the exception. Okay? तो इसमें यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया and you are throwing the exception. तो exception throw करने के बाद, it won't execute the डिस्ट्रक्टर पार्ट। रूल क्या है कि अगर आपके कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन आ गया तो डिस्ट्रक्टर कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिस्ट्रक्टर में आपने क्या लिखा था, फ्री D1 और डिलीट D1 स्टेटमेंट वाज देयर इन दैट डिस्ट्रक्टर। अगर वो डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ गया, तो ये जो D1 है वो डिलीट होगा ही, मेमोरी इज एलोकेटेड बट इट विल नॉट गेट फ्री if destructor is not executed. तो आपको as a programmer you need to take that care. So whenever this exception is there, I'm catching that exception in the catch, okay. So in catch I need to do the operation whatever is there in the destructor. अगर destructor नहीं execute होगा तो destructor का जो भी role है that I need to do it here. I need to free that memory using delete statement, delete D1, and then maybe आपको फिर से थ्रो करना है वो एक्सेप्शन, या फिर सी आउट स्टेटमेंट है आपका, मान लो यहाँ पे जो भी आपको डिस्प्ले करना है मैसेज कि व्हाट इज द इशू एग्जैक्टली, सो एक्सेप्शन related message you can display over specific. So before you handle the exception, the first thing that you need to do in the catch is to free that memory with the help of delete statement. जो भी dynamic memory allocation आपके यहाँ पे है, so that you need to free in catch block. What is the reason behind it? Because your destructor is not getting executed. That is the reason. Okay. I hope this concept is clear. Hello, ma'am. If I'm allocating memory dynamically and I fail to deallocate it,
then will the compiler generate a message or what happens exactly? No. A compiler won't generate as such message, but that creates a memory leakage problem. मतलब आपकी memory है ना, वो allocated रहेगी. See, in RAM what happens parallelly multiple applications are getting executed, है ना? हम ऐसे बहुत से program on करके रखते हैं, especially mobile पे तो आपने कितने सारे application on रहते हैं, हम भूल भी जाते हैं वो RAM से निकालने के लिए. तो अगर मान लो ये delete statement मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, if this is not there what will happen, आपका continuously, और ये मान लो यहाँ पे मेमोरी भी मेरी 20 नहीं है, 2000 मेमोरी लोकेशंस आई हैव allocated to this D1. मेरा काफी बड़ा एप्लीकेशन है, आई नीड टू स्टोर दिस मच मेमोरी. तो ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स, एक इंटीजर को कितने लगते हैं 4 बाइट्स, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स, सो दिस मच मेमोरी विल रिमेन अलोकेटेड. ओके अगर ये डिलीट स्टेटमेंट नहीं होगा आपका, यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड भी हो गया, मेन प्रोग्राम में से भी बाहर निकल आ गया, बट स्टिल दैट डैंगलिंग मेमोरी, ये कहीं पे तो आपने अलोकेट खुद. सी व्हेन डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन मतलब द प्रोग्रामर हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ द मेमोरी. मैंने कंट्रोल लिया है इस मेमोरी का, 2000 मेमोरी लोकेशंस का, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई फ्री दिस मेमोरी. अगर ये फ्री नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा और ये जो मेमोरी पैच है ना, इतना पैच अलोकेटेड रहेगा. ओके और बाकी पैरेलली आपने सपोज आपके दूसरे गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो दिस मच अगर आपका इतना पैच अगर अलोकेटेड रहेगा तो वो बाकी एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा एट दैट मोमेंट इन टाइम. यस एट दैट मोमेंट इन टाइम. बट अगर मान लो आपने प्रोग्राम डायरेक्टली, प्रोग्राम भी खत्म हो गया, आपने शट डाउन मार दिया, पूरा कंप्यूटर ही बंद कर दिया, तो इन दैट केस रैम तो एनीवे फ्री हो जाता है. इन दैट केस इट विल गेट, मतलब उस मोमेंट तक जब तक आप शट डाउन नहीं करते हो तब तक तो ये अलोकेटेड रहेगा. Okay. पॉइंट इज क्लियर? Yes. Yes. Okay. So this is about constructors and destructors. So constructor, destructor also we can have the you can have the try catch statement. Okay. Time ho gaya na. So today we'll stop here. Okay. And next time we'll